Hello everyone, welcome you all in this physics lecture. So, today we are going to learn itself about how to write the electric field intensity in terms of Cartesian rectangular component. So, Cartesian rectangular component means that the position if it is given in x, y and z. If three coordinates are given, three-dimensional geometry is there. So, how to write this electric field intensity in this components form? Okay, so for this purpose student, I have taken, this is the reference axis, x, y, z, all are mutually perpendicular to it, and I have placed a charge at the origin. Here it is origin O, and here I have placed a charge Q. Okay, so from this charge at a distance I have considered this point P. Okay, so now what are the coordinates of this point P? So it will be now in three, that axis x, y and z. Okay, so therefore its position vector I have taken it as r vector. Okay, so how much it is at a distance from the origin? It is r vector. Okay, so as student, in previous day video we come to know electric field intensity due to single point charge. So how much is that? So this I have written over there. It is in vector form. I am going to write it as, so it is given over there k q y r square, and that direction is r unit. Okay, now over here that I am going to write this electric field intensity in terms of rectangular coordinate. So therefore this unit vector, so how we can write unit vector? So here unit vector is given by that vector upon its magnitude. Okay, how we can write this unit vector? It is vector upon its magnitude. So therefore then if I will keep this value here, so what it will be? Then I get there it is E vector equals to kqy r square, and this unit vector value if I will put over there, so it is r vector upon में one more r will come. So already there is r square, one more r is going to come, then what it will be there? It will be rq. I am going to write it as rq. Okay, so now here this r vector position of this point P. So in three dimension we can write it as its position in x-axis. So it is xi unit vector plus that in j-axis, in y-axis it is yj, plus in z-axis it is given as zk. Okay, so this we are having the position in a three dimension. Okay, and if I want to find out its magnitude, so magnitude of a vector which is without this vector form, I am going to write it as scalar form is this. So how can we write this? So here it is, make the square of all those terms which is along with the unit vector. So here it is x का square plus y का square plus z का square का whole 1 by 2. Okay, this I am having that magnitude of the vector. Okay, so now therefore I can put all this value in this formula. So let us to see this formula. Here I am going to make it in rectangular box. So let it be as 1, equation number 1. So put in equation number 1, put in 1. Okay, so what I will get over there? Then this electric field intensity is equal to kqy rq. So r value is what? It is value x square plus y square plus z ka square, and its under root is there. What over there in this formula, in first equation we are looking that its whole power is 3, and here that its power was 1 by 2. So what it become then? It is 3 by 2. Okay, so this we are having, and how much is the value of r vector in first equation? So r vector is given in the vector form. It is xi unit vector plus yj unit vector plus zk unit vector. Okay, this I am having. So student, now this kq upon me that value which is written over here, it is going to multiply inside the bracket. Okay, so therefore
I can have this one, then it is KQ x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का 3/2 इट इज़ यूनिट वेक्टर प्लस दैट ऑफ के क्यू वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इट्स 3/2 इट इज़ जे यूनिट वेक्टर प्लस के क्यू जेड अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर its whole 3/2 it is that of k unit vector. So I made the multiplication inside the bracket. Okay, inside the bracket I did this multiplication. So now over here this if you will find that what is it, that it is there we are having electric field formula, again we are getting that. So this electric field is given in which direction? It is given in x direction. So therefore I am getting this one as here this is going to be that of electric field along x-axis. So it is EXI plus it is the electric field along y-axis. So it is EJ plus that of electric field along z-axis. So it is EZ. K unit vector is there. So it is that resultant electric field. So what is the meaning of Ex, Ey, Ez over here? So we are getting that this Ex is what? Ex magnitude form I am taking over here. It is KQ along x-axis upon में that distance. So it is 3/2 over there. And what is that Ey in this that formation over here? So it is KQY upon में x square plus y square plus z square whole 3/2. And what is Ez there? So it is KQZ upon में that of x square plus y square plus z square and it is 3/2. Okay, so thus we come to know that how to write this electric field in terms of rectangular component. So there we are having this Ex, Ey, Ez. What are these? So these are the rectangular components. Okay, now student we are going to learn over here. Is this okay? That how we can write this in a rectangular component. So this is given as that electric field in the rectangular component is EXI plus EYJ plus EZK, and this electric field along x-axis, it is the electric field along y-axis, and it is the electric field along the z-axis. Okay, now let us to learn over here that it is regarding to superposition principle in case of electric field. Superposition principle. Okay, so over here जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने में कैसे हेल्पफुल है, ठीक है. सो ओवर देयर आई एम हैविंग दिस हेडिंग दैट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस अराउंड द गिवन चार्ज, ठीक है. तो इसलिए EFI जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस okay, so with the help of superposition principle we are going to find it out. For this student already we have done in our previous topic जिसमें हमने क्या किया था, एक चोर माना था, है ना, चोर माना था जो सब कुछ चुरा के भाग रहा था और उसको ये पहला आदमी पकड़ता था, ठीक है. तो उस वक्त हमने क्या किया था, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके नेट फोर्स फाइंड आउट की थी. सो अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम जस्ट टू चेक इट आउट. ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, इसने फोर्स लगाई थी, यहाँ पे कितनी फोर्स लगाई थी उसको हमने लिखा था F01, ठीक है. ये दूसरा चार्ज आया था हमारे पास Q2, हाउ मच फोर्स इट हैज़ अप्लाइड, तो ये हमारे पास फोर्स बन गई थी F02. अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ लेट इट बी द nth चार्ज, सो हाउ मच इज द फोर्स ऑन दिस वन, सो इट विल बिकम देन जो nth पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा था इट वॉज F0n फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू nth, ठीक है.
तो व्हाट वाज द नेट फोर्स इन दिस केस, तो हमने क्या लिखा था कि जो नेट फोर्स है इट इज द वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम किसका था, दैट इट वाज इंडिविजुअल फोर्स का विच इज अप्लाइड बाय दैट इंडिविजुअल चार्ज, सो इट इज F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन प्लस F0n, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल जो चार्ज है जो फोर्स अप्लाई करता है उसका वेक्टर सम हमारे पास, दैट विल गिव अस द नेट फोर्स। इट वाज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दैट केस, ठीक है। नाउ ओवर देयर वी आर नोन विद वन थिंग कि हमारे पास जो जिस तरफ फोर्स होती है वही डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो क्या होता है हमारे पास, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। उस चोर के ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। सो दिस इज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो देयरफॉर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे चाहिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे साइड को क्यू नॉट से डिवाइड कर रहा हूँ, सो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्यू नॉट, तो दोनों साइड मैंने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। हम ये जानते हैं, वी आर नोन विद दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। बट वी आर यूजिंग टेस्ट चार्ज ओनली टू फाइंड आउट इट्स स्ट्रेंथ, so therefore this is over there net electric field, both side we are going to divide with the q naught, so therefore I am getting over here it is q naught plus it is f naught 2 upon my q naught plus so on, that it is f naught n upon my q naught. So you will find over there what is that force experienced by the test charge, ठीक है। what it is the net force, so we are, therefore I am going to write here it is the net electric field. So net electric field it is that force experienced by that this first on that test charge due to first charge, जो Q1 था उसकी वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी रही थी, सो दिस इज गिविंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट इट इज एज E1 and here it is the strength of the electric field of second charge, so it is E2 plus so on, it is nth electric field. So thus I am getting over here what is this, it is the resultant electric field, ठीक है। तो resultant electric field हमारे पास आती है, ठीक है। So thus we get over here what is superposition principle, how it is helpful to find out electric field intensity due to a system of charges. So therefore we can say that this electric field, net electric field strength is given by the vector sum of, it is what, vector sum of all the electric field intensities exerted या produced due to individual point charges. Okay, so this we are getting over there individual पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी हैव रिटन दिस जस्ट विद द हेल्प ऑफ द दैट फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की हेल्प से हमने निकाल लिया, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग दिस दैट superposition principle in case of electric field intensity. It mean to say force is going to follow superposition principle, electric field is also going to follow superposition principle. So over here student, now we are going to learn about that suppose I am having that the two electric field are going to act at an angle. Okay, so here I am going to note down this one thing. Suppose that I am having one electric field is given in this way and second electric field is acting in this way at this point. Okay, इस O पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एक्ट कर रही है E1 और E2, ठीक है। तो जो एक एंगल के ऊपर लग रही है दैट इट इज थीटा एंगल, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड, तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस, जनरली यू हैव टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो,
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक पैरेललोग्राम, और ये जो डायग्राम, ये जो डायगोनल होगा, ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इट इज़ ई। ठीक है, तो इसलिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड का, ई। तो रिजल्टेंट फील्ड जो हमारे पास एक्ट कर रही है ई के ऊपर, व्हेन दीज आर एक्टिंग एट टू दैट दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्टिंग एट एन एंगल, तो एट दैट मोमेंट इट विल बी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दम। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग एंगल हो सकते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वो एंगल आपने वहाँ पे रखना होता है। ठीक है, रिमेंबर ओवर देयर, अगर कॉस थीटा that we are have to calculate it for दिस एंगल 120 डिग्री, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 120 डिग्री के लिए निकालनी है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1/2, ये माइनस ऑफ 1/2 होती है। एंड इफ इट इज़ फॉर कॉस 90 डिग्री then this is going to be 0, and if it is of cos 0 degree then its value will come 1। ठीक है, so thus we come to know over here, if the two electric fields are going to act at an angle, then resultant field is given with the help of superposition law, and this is going to calculate with the help of this formula. Now suppose over there another case, if the two electric field are going to act along the same line, we are taking over here, यहाँ पर ये पॉइंट O है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही राइट साइड को एक्ट कर रही है, अलॉन्ग सेम लाइन एक्ट कर रही है या पैरेलल एक्ट कर रही है। ठीक है, सो हाउ मच इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस O पॉइंट, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। एंगल क्या बन गया एट प्रेजेंट में, आपके पास एंगल बन गया उसमें 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करने से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सिंपल इट विल कम E1 प्लस E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड वहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट अस टू टेक दिस अनदर एग्जांपल दैट विच वी आर सपोजिंग ओवर हेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट हेयर इट इज द टू फील्ड आर गोइंग टू एक्ट, ये मेरे पास पॉइंट O है, इसमें एक फील्ड क्या कर रही है, टूवर्ड राइट एक्ट कर रही है, एक फील्ड टूवर्ड लेफ्ट एक्ट कर रही है। सो आई एम सपोजिंग टूवर्ड राइट इट इज E1 और इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रही है, E2 एक्ट कर रही है। ठीक है, सो नाउ हाउ मच इज द नेट फील्ड एट E, तो E के सॉरी नेट फील्ड एट O क्या होगी, तो नेट फील्ड अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए क्या निकाला जाएगा नेट फील्ड को, E1 माइनस ऑफ E2 निकाला जाएगा। सो दिस वी आर हैविंग ओवर देयर दिस रिजल्टेंट फील्ड इन दिस केस।